Okay. Good morning, everyone. Welcome back to Crack Grade B. मेरा नाम है Good ऋषभ। morning everyone. Welcome back to Crack Grade B. मेरा नाम है Good morning everyone. Welcome back to Crack Grade B. मेरा नाम है Good morning everyone. Welcome back to Crack Grade B. मेरा नाम है Wait. Good morning, everyone. Welcome back to Crack Grade B. मेरा नाम है ऋषभ. And let's begin today's class for economics and finance issues and analysis. So, this bit. Good morning, Nivedita. Good morning, Gaurav. Good morning, Shreya. Good morning, Monica. Monthly compilation of this. 10 days compilation is uploaded. Suraj Dash or Suraj Das. 10-day compilations are added. And daily PDFs are also updated. Okay. Start. तो ये फैक्चुअल न्यूज है, फेज 1 के लिए टाइप की न्यूज है, एक नंबर ज्यादा नहीं है। तो जस्ट रिमेंबर द हेडलाइंस, ऐसी न्यूज की सिर्फ हेडलाइन याद रखो होते हैं, ठीक है। लिस्टेड गवर्नमेंट फर्म्स कंट्रीब्यूटेड ₹2900 करोड़ टू पीएम केयर्स। बेसिकली कभी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन पीएम केयर्स फंड, ठीक है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन और मैक्सिमम डोनेशन इन पीएम केयर्स फंड हैज कम थ्रू लिस्टेड गवर्नमेंट फर्म्स, ठीक है। लिस्टेड पीएसयू कितना आया है? अराउंड 3000 करोड़, 2900 करोड़, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट रन firms accounted for the majority of donations that listed entities made to the PM Cares and PM Citizens Assistance and Relief Emergency Situation Fund। ये बना कब था? ड्यूरिंग कोविड, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड। इसमें ही सब लोग अपना मतलब डोनेशन ट्रांसफर कर रहे थे एट द टाइम ऑफ कोविड। Now this is a very unique fund. It is not under RTI, okay, and also it cannot be like audited by CAG etc. ठीक है, एक तरह का प्राइवेट ऑपरेटेड फंड कैटेगरी में इसको ओपन किया गया था। ओके, so top contributor has been ONGC and then NTPC। 2900 करोड़ में सबसे ज्यादा ONGC ने दिया, सेकंड पे NTPC। जस्ट रिमेंबर दैट, कुछ और नहीं। Okay, so the chairman of the fund is Prime Minister and the trustees include Defense Minister, Home Minister and Finance Minister। ओल्ड न्यूज है, पीएम केयर्स अपने आप में 3 साल पुरानी न्यूज है, ठीक है, 2 से 3 साल पुरानी। इट इज ओल्ड बाय 2-3 years because COVID was 2-3 years before। गुड मॉर्निंग कविता, ठीक है। सो दैट्स वाई बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं इन पीएम केयर्स पर। जस्ट रिमेंबर 2900 करोड़, जस्ट अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर फेज 1, दैट्स इट। So PM Cares Fund is a charitable trust registered under Registration Act 1908 at New Delhi in 2020, ठीक है। The trust does not have any budgetary support. It is totally dependent upon the charity, और ठीक है। PM Cares Fund also receives donations from individuals and other organizations besides the company. These people who are working, they can also contribute to PM Cares। Okay, now एसेट मोनेटाइजेशन का टारगेट दिया जाता है। एसेट मोनेटाइजेशन बेसिकली मींस टू रेज फंड फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज is going to raise 35,000 करोड़ थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन का ये मतलब नहीं होता है कि सीधे बेच दो, सिर्फ बेच दो चीजों पे, ठीक है, जस्ट सेल थिंग्स। नो, इट एसेट मोनेटाइजेशन मीन्स to use your resources to use your resources and earn money through private sector। अपने रिसोर्सेज का यूज करो और प्राइवेट सेक्टर से पैसे बढ़ाओ, ठीक है। यूज एंड मेक मनी थ्रू प्राइवेट सेक्टर। हमने रेलवेज में देखा है, लाइक तेजस ट्रेन दैट आर रन बाय IRCTC, ठीक है। उसी तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब होती है
that is also a kind of asset monetization. Build, operate, transfer, get toll, operate, transfer. These kind of projects are, like asset monetization. Or if the government is releasing bonds for infrastructure investment, like invites, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट पैसा ले रही है. Government is using its assets, these highways are asset of the government, using those assets as collaterals and arranging money from private sector. तो ये भी एक तरह का एसेट मोनेटाइजेशन है. कोई जरूरी नहीं कि बेच के ही पैसा कमाया जाए, ठीक है. एक तरह से उसको कोलैटरल की तरह यूज करके भी पैसा बना सकते हैं, यूजिंग दैट पब्लिक एसेट एज कोलैटरल्स एंड टेक मनी फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, ठीक है. सो वही है, इसमें याद ये रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का इस साल का एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट है 35,000 करोड़. लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 33,000 करोड़, 32,855. रिमेंबर इट एज 33,000. 2,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा एसेट मोनेटाइज करेगी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज. तो MORTH monetizes its asset in under 3 different categories. 3 तरह से करती है. पहला, टोल ऑपरेट ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग, ठीक है. 3 टाइप्स ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन बाय MORTH is टोल ऑपरेट ट्रांसफर. दिस मीन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर नहीं है, ये टोल ऑपरेट ट्रांसफर है. दिस मीन्स प्राइवेट सेक्टर विल बी अलाउड, ठीक है, टू रेज टोल, ऑपरेट द रोड. इन केस कोई प्रॉब्लम होती है, मेंटेनेंस ऑफ द रोड इज फेयरली अपॉन द प्राइवेट सेक्टर. सो टोल लो, ऑपरेट करो, एंड व्हेन योर, लेट्स से, whatever money you have invested, ठीक है, that recovers, you can transfer the, let's say, highway back to the government, ठीक है. जब गवर्नमेंट के पास वापस आ जाएगा, so government can either take toll or not take toll, वो अब गवर्नमेंट के ऊपर है. बट टोल ऑपरेट ट्रांसफर इज अ मॉडल फॉर मोनेटाइजेशन, ठीक है. Second is obviously invites, because in infrastructure investment trust are kind of mutual fund. Pooled asset होता है infrastructure investment trust, where private sector can invest their money for the development of infrastructure, ठीक है. और इस पे थोड़ा हाई रिटर्न्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, बट या हायर रिटर्न्स. ओके, नाउ एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग. प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग क्या होती है? प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इज लाइक न्यू एज कंपनीज, ठीक है, जो स्टार्टअप्स होते हैं. दे आर एक्चुअली नॉट बेस्ड अपॉन द व्हाट इज द एक्चुअल एसेट वैल्यू, बट द वैल्यूएशन ऑफ, जैसे नए स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन इज बेस्ड अपॉन द कैश फ्लोज दैट इट स्टार्टअप्स विल जनरेट इन फ्यूचर. फ्यूचर में कितना कैश फ्लो जनरेट करेगा, वो उस पर डिपेंड करती है वैल्यूएशन ऑफ द स्टार्टअप्स. दैट्स व्हाट इज प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग. मींस पीपल सी फ्यूचर, ठीक है, दे प्रेडिक्ट दैट फ्यूचर में ये this project will earn this much of cash and we will get a fair amount of return. तो ये होती है प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग. जिस प्रोजेक्ट पे कैश फ्लो या प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देते हैं, ऑन दैट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज मोर बाय प्राइवेट सेक्टर, दूसरे में थोड़ी कम. तो ये 3 तरह से मोनेटाइजेशन होता है बाय MORTH, ठीक है. Now, to provide investor an opportunity to invest in assets pertaining to highways and infrastructure, ठीक है. Just remember 35,000 crore and the 3 methods. Now, India-Ukraine Chamber of Commerce set up. Okay, it is going to set up a Chamber of Commerce. Kyun? Because why? Because Ukraine wants India to invest in redevelopment of Ukraine post-war. ठीक है, जैसे हम लोग अफगानिस्तान में भी इन्वेस्ट कर रहे थे. Okay. We invested in the parliament of Afghanistan also. We made the parliament of Afghanistan. PM Modi himself inaugurated the parliament of Afghanistan. And before any one session could be completed, I think Taliban took over. So, जैसे इंडिया ने अफगानिस्तान रीडेवलपमेंट के लिए एक तरह से हेल्प की थी, just like that Ukraine also wants that post-war Ukraine redevelopment पे India should help and directly invest in Ukraine. So that's why Chamber of Commerce को सेटअप किया जा रहा है, हुआ नहीं है, it will be set up. Okay? So an India-Ukraine Chamber of Commerce will be set up in coming months in an effort to boost
बिजनेस गाइस बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं। अब 3-3.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, 3 to 3.5 फ्रॉम यूक्रेन. So the development follows a visit to India by the first Deputy Finance Minister of Ukraine. Don't remember the name. Deputy Foreign Minister of Ukraine. And during the visit, the Finance Minister, obviously, I mean, suggested that Indian infrastructure firms participate in reconstruction of Ukraine, which is in war with Russia. Okay, and total trade between India and Ukraine is around $3.5 billion in 2020. I just need to remember this. याद क्या रखना है? With which country India is going to make? Let's say अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आएगा. With which country India is going to make a trade chamber of commerce? तो ये Ukraine. That's it. For the redevelopment of Ukraine. Okay, now India plans to host first global insurance summit to attract investment. ठीक है, जैसे वाइब्रेंट गुजरात या फिर यूपी में होता है यूपी बिजनेस समिट. तो दीज काइंड ऑफ समिट्स हैपन. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि टू शोकेस योर स्टेट. ठीक है, दैट वी प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटीज टू यू एंड रेज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर, बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स. ठीक है, तो अगर समिट्स होते हैं जैसे यूपी समिट हुआ था या वाइब्रेंट गुजरात समिट, इस टाइप के जो समिट्स होते हैं, दिस इज टू शोकेस व्हाट यू आर एंड टू अर्न रेज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर्स. तो यही होगा इंश्योरेंस समिट में. वॉट एवर इंश्योरेंस समिट विल बी हेल्ड, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्लोबल इंश्योरेंस समिट लेटर हाफ ऑफ द ईयर. सो अभी ये हो नहीं रहा है, इसका कुछ भी रेडी नहीं है, बट इट्स अ न्यूज दैट इंडिया इज गोइंग टू होस्ट फर्स्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्लोबल इंश्योरेंस समिट. व्हाट इज द एम? सिंपल एम है. अगर कोई भी समिट होगा तो सबसे बड़ा एम तो यही है कि पैसे उठाने हैं. ठीक है, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट. So number one is to flag challenges facing in the industry, then turn the global spotlight on Indian insurers, and then attract investments. Attract investments. ठीक है, तो ये तीन बेसिक एम क्या है? जस्ट टर्न द ग्लोबल स्पॉटलाइट ऑन इंडियन इंश्योरर्स एंड देन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स. तो इसमें क्या होता है? एमओयू साइन होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एवरेज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम $3 billion एटसेट्रा. ठीक है, इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई अलाउड है. डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनीज में ऐसे 100% है फॉर द इंटरमीडिएट्स. ओके, अब इसको होस्ट कौन करेगा? द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अलॉन्ग विद इंश्योरेंस सेक्टर एसोसिएशन, इंश्योरेंस सेक्टर कंपनीज एटसेट्रा will be working on a roadmap for this investment summit. ठीक है, that's all. Now government works to shutter Ponzi apps. अब ये न्यूज है क्यों? Why it is in news? It is because our finance minister is not very happy with the influencer committee, financial influencer committee. ठीक है, she was giving a lecture on that somewhere. ठीक है, that's why it is in news. अब ये Ponzi ऐप क्या होता है? Ponzi ऐप is basically derived from Ponzi scheme. ठीक है, Ponzi, wait, I will say it. So it is based on Ponzi schemes. Ponzi schemes क्या होती है? The schemes that promise you unreal returns. Ponzi खुद एक आदमी थे. Charles Ponzi was a man who promised 50% of the returns in few days. ठीक है, कि जितना इन्वेस्ट करोगे उसका 50% एक्स्ट्रा इन लेट्स से 20 days 25 days I will return to you. ठीक है, अनरियल रिटर्न्स. हाउ दे विल डू, दे डोंट टेल यू. वो एक इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें 50% एक्स्ट्रा दूंगा. एंड हाउ दे गिव इट फॉर द इनिशियल इन्वेस्टर्स. तो वो फिर अगले इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं, उस इन्वेस्टर के पैसे को वापस कर देते हैं पहले इन्वेस्टर को. ठीक है, सो दे थिंक यो दिस स्कीम इज वर्किंग एंड ऑल,
and they invest more than this Ponzi scheme. This is how it works. ठीक है, basically the premise of हेरा फेरी. ठीक है, 21 दिन में पैसा डबल, that is also a Ponzi. तो उसी तरह Ponzi apps, and these Ponzi apps do what? They promise you unreal returns. We can do this, we can do that. Invest through us, invest in us. ठीक है, take our tips. तो ये जो influencers की ऐप होती है, financial influencers की, finance minister was not very happy with that. Though there are no regulations currently, but it will be. ठीक है, so RBI and Ministry of Electronics and Information Technology, ये दो चीज याद रखना. RBI and Ministry of Electronics करेक्ट होने का 21 दिन में पैसा डबल. तो this is RBI and MEIT is going to lay a framework for these financial influencers. ठीक है, influencers. So currently government is not considering any proposal to regulate financial influencer on social media, but is coordinating with RBI and MIT so that there can be some guidelines. जैसे अभी guidelines आई हुई है ना paid advertisement और subscription based advertisement के लिए. There are guidelines of social media we have seen. ठीक है, just like that for influencers also, so that these advices are not Ponzi ना हो जाए, Ponzi apps. That's why new guidelines will be in place soon. Why these guidelines? To check Ponzi apps making outlandish financial claims. The finance minister Nirmala Sitharaman has said. Okay. In January, the government issued new rules for social media influencers, mandating clear disclosures about brand association, that if they are paid, okay, etc. Influencer who fail to comply may face fines up to 50 lakhs and prohibited for endorsing any product up to 6 years. ठीक है, ये guidelines क्या है? So basically you have to be transparent. ठीक है, be transparent about your association. About your association with the brands you are endorsing. ठीक है. Also, disclosures are required to be published when there is a material connection between advertisers and a celebrity or influencers. For example, a certain brand, let's say Papa Earth, sends you a product to endorse. They don't give you money, they just send you product. Okay, from time to time. So ये disclosure भी करना होगा कि that we have, it's obviously a sponsored video. Okay, the rules come at a time when influencer industry is supposed to reach by 2,800 crore by 2025. सिंपल है ये. Ponzi scheme इसमें पता होनी चाहिए क्या है. And that's all. ये सब अभी है नहीं. RBI and MIT Ministry are working towards making some guidelines. Now this news you can use to write answers. It's अब ये न्यूज का यूज करके you can't answer, let's say, कोई टिक वाला क्वेश्चन. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस न्यूज कैन बी एसेंशियल फॉर योर गुड आंसर राइटिंग. तो उसको उस हिसाब से पढ़ना इस न्यूज को फॉर डिस्क्रिप्टिव. तो IRDI हैज डन रीसेंट रिफॉर्म्स, ठीक है, फॉर एक्सपैंडिंग द मार्केट. वी हैव सीन इट. इन्वेस्टर कमीशन के ऊपर से कैप हटा दिया, 2 कैप हटा दिया है, बट ओवरऑल इन्वेस्टर कमीशन टोटल एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट के 35% से ज्यादा नहीं सकता. मतलब फॉर मैनेजिंग अ सर्टेन फंड और अ सर्टेन कंपनी 35% ऑफ द टोटल एसेट इंश्योरेंस कंपनी कैन यूज. ठीक है, तो उस 35% में आता है इन्वेस्टर कमीशन ऑल्सो, एजेंट कमीशन ऑल्सो. तो ओवरऑल 35% से ज्यादा नहीं हो सकता ओवरऑल कंपनी के. ठीक है, नेट ऑन फंड के. But still there is no cap on commission. I will tell you later in this news also for being more clear. Okay, why is this in news? What is the news? India's resolve to emerge as global economic powerhouse is anchored in the twin pillar of self-reliance and economic reliance. ठीक है, self-reliance आत्मनिर्भर, economic reliance means आत्मनिर्भर भारत. Okay, as
macroeconomic conditions worldwide present newer risks and challenges. Insurance and reinsurers assume a crucial role in insulating the economy from external shocks. ठीक है, बेसिकली इंश्योरेंस का काम क्या होता है? टू शील्ड यू फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल इवेंट्स. ठीक है, तो वैसे ही if our insurance sector will grow, it will shield us from external macroeconomic instability factors. Okay, against the backdrop, IRDI visionary insurance for all by 2047 mission. Remember this, 2047 insurance for all mission by 2047. अगर ऐसे नहीं याद कर पा रहे हो तो remember it like this: 100 years. By 100 years of independence, IRDI is thinking of what? For doing insurance for every citizen of India. ठीक है, 100% penetration of insurance. जैसे भी financial inclusion के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, then insurance for all will be the vision of the government, maybe. ठीक है, plays a crucial role in realizing the goal of building financially robust and resilient nation. Okay. IRDI roadmap for insurance reforms encompasses a range of strategic measures for enhancing the accessibility and affordability of insurance products and also for industry development. So, for example, abhi around 2 to 4%, depending upon the product of insurance, 2 से 4% insurance penetration है India. ठीक है, 2 to 4% is like 2 करोड़ लोग. ठीक है, out of 140 billion, 140 crore people that we are, around 2 crore, 3 crore like that people use, 2 crore. ठीक है, only this much people use insurance. ठीक है, so the potential of insurance market in India is huge. बट इसका ये मतलब नहीं है कि अब जैसे डिमांड बढ़ेगी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की, सो ऑटोमेटिकली द प्राइस ऑफ इंश्योरेंस विल कम डाउन इन इंडिया. जितने ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेंगे उतना प्राइस कम होता जाएगा. इंश्योरेंस कंपनीज के पास पैसे ज्यादा आते जाएंगे तो इंश्योरेंस का प्राइस कम होता जाएगा. बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. वाई? जब ज्यादा लोग लेंगे इंश्योरेंस, then maybe the claims will be so can become so much higher because of Indian conditions that it will not be sustainable to reduce the price. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, और सुरक्षा बीमा योजना, सबकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ी है, प्रीमियम कॉस्ट. वाई? बिकॉज द कंपनीज वर नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट. जितना उनको पैसे मिल रहे थे उससे ज्यादा उन्हें देने पड़ रहे थे. ठीक है, उससे ज्यादा उनको वापस करने पड़ रहे थे. दैट्स वाई इंश्योरेंस प्रीमियम हैज गॉन हायर. ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ता है तो द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम गोज डाउन. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच इंश्योरेंस यू आर क्लेमिंग. ठीक है, क्लेम सेटलमेंट में कितना पैसा देना पड़ रहा है कंपनी से. सो ऑब्वियसली अगर इंश्योरेंस ज्यादा होगा तो क्लेम सेटलमेंट भी ज्यादा होंगे. तो या इट्स अ हिट और अ मिस दैट if that product cost will come down or not. Okay, target is to achieve accessibility for all by 2047. सिंपल है, ये याद रखना है. 2047, 100 years of India independence. Insurers today are tasked with a greater responsibility to understand their customers' need through timely and unique solutions, addressing the need for rapidity in today's dynamic market. IRDAI's use and file framework helps spawn innovative offerings, and also it provides flexibility in designing innovative products. ठीक है, and shorter timelines for introducing insurance plans in the market. So these three will be the go-to solutions today by that was introduced by RBI to achieve greater accessibility of insurance by 2047. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है इंश्योरेंस के ऊपर. क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग को केटर करना हो. ठीक है, रैपिडिटी इन द डायनामिक मार्केट मींस यूज एंड फाइल फ्रेमवर्क. दैट मींस पहले यूज कर लो एंड देन फाइल, मींस यू कैन इंट्रोड्यूस अ पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट एटसेट्रा. ठीक है, प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस विद फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मिली? रिमूविंग द एजेंट कैप. ठीक है, फॉर टेकिंग FDIs up to 74%. ये भी एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है. एंड दे कैन डिजाइन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. ठीक है, हाउ दे कैन डिवाइस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स? by raising extra funds
and taking experience from foreign markets. ठीक है, जो FDI इन्वेस्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, एक्सा इंडिया की कंपनी नहीं है, एक्सा इज एक्चुअली अ इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय इज इंडिया, ठीक है, दे कैन यूज द एक्सपर्टीज ऑफ फॉरेन कंपनीज एंड द फंड्स ऑफ फॉरेन कंपनीज to innovate products more innovate products faster. That's what it wants to say. Now latest amendment यही दो हुए, पेमेंट ऑफ कमीशन कैप हट गया एंड एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट. Let's talk about that. So payment of commission, so for payment of commission there is no cap now. No cap, we have read about it. And expense of management के ऊपर cap है 35%. ठीक है, expense of management क्या है? Expense of management is all you can do as expenses of your day-to-day activity. Business, insurance business run करने के लिए, to run the insurance business, how much of the total net own fund you can use for managing your resources is 35%. So payment of commission is also a part of expense of management. ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है. तो पेमेंट ऑफ कमीशन कभी भी इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि 35% की ओवरऑल लिमिट को क्रॉस कर दे, क्योंकि 35% में सब कुछ आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सैलरीज एक्सेट्रा, salaries of actual fixed employees, salaries of or commissions of agents, सब कुछ इसी 35% के अंडर आता है. तो payment of commission cannot be higher than expense of management because payment of commission is a part of expenses of management. ठीक है, though there is no cap on payment of commission, cap नहीं रहेगी तो agents will get higher commission for products, but commission वाले products का दिक्कत ये होती है that people don't get higher returns. But if the insurance company will innovate with better products, then maybe they will. Okay. Now, what is the aim of this? Aimed at freeing the industry from restriction of multi-layered expense limit and expected to assist in expanding the insurance market. ठीक है, क्या क्या एम है इसका? 3. Too much regulation reduces innovation. सिंपल सी लाइन है याद रखो, टू मच रेगुलेशन रिड्यूसेस इनोवेशन. जितना ज्यादा ओपन करेंगे मार्केट को, इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इंक्रीजेस, ठीक है, विथ ओपनिंग अप ऑफ मार्केट. दैट्स हाउ योर इंडस्ट्रीज कैन गो बिग. ठीक, it will also expect to assist in expanding the insurance market. Okay. Future, as the market grows, the impact of such reforms on insurance products will inevitably decrease, allowing insurers to offer more competitive pricing. ठीक है, ज्यादा कंपनीज होंगी, प्रोडक्ट अच्छे होंगे, ठीक है, देयर विल बी कंपटीशन, तो देयर विल बी प्राइसिंग कंपटीशन आल्सो. इंडिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन ही प्राइसिंग पे होता है, ठीक है, बिकॉज वी आर अ फ्रूगल इकोनॉमी. ठीक है, द रीसेंट रिफॉर्म्स अनाउंस्ड बाय आरबीआई विल बोल्स्टर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस and also will aid in making sector more investment friendly. ठीक है. Now way forward, use this for writing answer. That's what I am saying. उस 2047 के अलावा इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह आ सकता है. ठीक है. वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इज द न्यू लिमिट फॉर प्राइवेट इक्विटी फंड्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है. The reforms have allowed insurers to access more capital, which will enable them to attract more investments, strengthen their balance sheet, and pursue growth opportunities. वही है, 74% FDI in companies, 100% in intermediaries. They can raise more capital from from other private sector, foreign sector, etc. Now, simplifying regulatory and compliance requirements is another important pillar in the roadmap to enable insurers and focus more on the core business, leading to better outcomes. ठीक है. Lesser regulatory compliance means they can use their time to innovate into products, and अपना जो core business है, that is insurance product, obviously selling insurance product, they can put upon more time upon that. And also
by leveraging technology and collaboration. Obviously, use technology and your leakages will be lower. ठीक है, not only encourage incumbent player but also contributed to the rise of insurtech. अब insurtech क्या means? Echo is a very good example of insurtech. Echo, ठीक है. Echo is a company, एक ऐसी कंपनी है इंश्योरेंस की that is basically based on selling insurance products through online market app के through. That is rise of insurtech by technology. Okay. Insurers must be quick to respond to the evolving regulatory environment by offering innovative solutions and boosting their digital capabilities. And next big milestone is to enable financially protected society. Okay, financially protected society, and the insurance industry will have to play a crucial role in that. So this is a descriptive type news. Okay, this is a descriptive type news. So use this news as to write your answers, good answers. I don't think in RBI this kind of question will be asked, but IRDI के लिए अगर कुछ भर रहा है, so you can use it. And also keep on writing क्योंकि शायद वो pen and paper based है, not typing based. So improve your handwriting also. Okay, so that's it. Let's do the MCQs. Those who will be watching recording, please try these MCQs and please try to comment. Thank you. Okay, so question number 1. How will IRDI's recent reform impact the insurance market in India? बहुत अच्छा वर्ड है ये, रिफॉर्म. रिफॉर्म का मतलब होता है कुछ अच्छा ही होगा बदलाव के बाद. Sumit, Monica, Gaurav, Shreya, correct. They will enhance the accessibility and affordability of insurance products. सही जवाब. यही होगा और क्या होगा? रिफॉर्म का मतलब कुछ बेहतर होगा. Okay, second. Which fund was set up in March 2020 to assist citizens during emergency situations? Okay, Shreya, Sumit, Monica, correct, Gaurav. Correct, Nivedita. So yeah, it's easy. PM Cares Fund 2020 में बना था ये. ठीक है. और तो कुछ है नहीं इसमें. मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन बाय पब्लिक सेक्टर यूनिट्स 2900 का. उसमें भी सबसे ज्यादा वो एनजीसी. दैट्स ऑल. फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन. नथिंग एल्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम इट. Now, which ministry in India plans to raise 35,000 crore through asset monetization? Correct, Shreya. Monica, right. Gaurav, Sumit. Basically, same ही answer है. I can't. Correct. C is right. Ministry of Road Transport and Highways. Now, what is the aim of India's first state-sponsored global insurance summit? ये वाला नहीं है अब. Correct, Sumit, Gaurav, Monica, correct. Correct, Shreya. Correct, Nivedita. Okay, so it's B, easy question. To attract investment in insurance sector in India. अब इसकी डेट मंथ कुछ नहीं पता. Still in works. Last question. Which ministry in India is coordinating with RBI to check on Ponzi apps?
back to the pavilion. Say the answer now. Correct, Sumit. Correct, Gaurav, Shreya, Nivedita. Yes, everyone is right. C is the correct answer. 90. Ministry of Electronics and Information Technology and RBI are coordinating to make some guidelines for Ponzi apps. Okay, that's it. Yes, that's it for today. Yeah, that's it. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन आई होप यू लाइक द लेक्चर अगर आज के लेक्चर से आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड हुआ है तो डू लाइक एंड शेयर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय